Hello everyone. The question has been taken from Olympiad Pathfinder, Chapter 12. Build your understanding, question number 21. The question says two identical non-conducting triangular plates, each of area A, carrying uniform positive charges plus 3q and minus 2q, or are kept parallel to each other by inserting three identical insulating rods between their corners as shown in the figure. Distance between the plates is much smaller than their linear dimensions. Assuming the assembly to be isolated from other bodies, find compressive forces developed in the rods. So let us break down this question first. Two identical non-conducting triangular plate. One is this and the other one is this one with the sides. These two plates are non-conducting and identical with an area A. Let us say that the plate which is in front is carrying a total charge of plus 3q, which has been uniformly distributed over it, and minus 2q is the charge which is uniformly distributed on the another triangular plates which is behind it. So this is the breakup of first line. These two plates are kept parallel to each other by inserting three rods at the corner of the triangle. So these are the three rods. Distance between the plates is much smaller than the linear dimensions. The distance between these two plates, is much smaller than the linear dimension of these plates. If we say the distance between the plates is d, then what does this mean is d is much less than linear dimensions of triangular plates. So what does this give? You know that close to a plate, is in the vicinity of the plate, the electric field intensity is given by the formula sigma by 2 epsilon naught, where sigma is the charge density on that plate and epsilon naught is the permittivity constant in the vacuum. So this is the way the electric field intensity has been formulated for the vicinity points of a plate. Because when you see the plates from very close, it will appear infinite to you. You cannot see the ends. So
So it behaves like it is like an infinite plate for the nearer point. And as per question, distance between the plates is much smaller, much smaller than the linear dimension. So we can comfortably write electric field intensity between the plate with this formula. Assuming the assembly to be isolated from other bodies. So what does this mean? This assembly, this assembly is kept in an environment which does not have anything in surroundings. Means there is no impact of or reaction of surrounding on these two plates. So means it is a totally isolated system from the surrounding. So front plate is having plus charge, positive charge. The backside plate is having the negative charge. So we know that positive and negative charge attracts each other. So means there will be a force of interaction between the front plate and the plate which is behind. But this movement, the force, because of force, these two plates should move towards each other, but this movement has been restricted by providing these three rods attached at the corner of the two plates. So if this is the plate, in between them triangular plate at the corner, such kind of rod is fixed, so it will not allow it to collapse to each other. So what is happening because of that? Because these two plates are getting attracted towards each other, and this plate is moving, has a tendency to move this side, and this plate has a tendency to move this side, but this rod, the three rods, is restricting it to move. So this rod will be under compression. So these all three rods will be under compression, and that compressive forces we are to find like how much it will be. For better illustration, the diagram has been magnified. You can see it here. The front plate is A, B, C. It has been given a name A, B, and C. And the backside plate has been given a name A prime, B prime, C prime. Front side plate is having plus 3q charge distributed uniformly over its entire surface. And the backside plate is having minus 2q charge spreaded uniformly on its entire surface. That surface area A is given. And as we said that the distance between these two plates is very small than the linear dimension of the triangular plates. So we can give the electric field intensity between these two plates by this formula. So if we say the electric field intensity because of the plate ABC in between is sigma by 2 epsilon naught. So sigma will be
the total charge on the plate ABC, that is 3Q, divided by its area. Where sigma is the charge density. So magnitude of electric field intensity between these two plates will be this much. And what will be the electric field intensity? Direction in between these two plates. It will be perpendicular to both the plates. Or you can say all the electric field lines which is emanating from ABC will be perpendicular to its surface, and the other plate which is parallel to the ABC plate, so those lines will be perpendicular to that plate as well. So direction will be inward to the plane of ABC and A dash A prime B prime C prime and perpendicular to it. So that has been shown as or we should say that the unit vector what we have taken perpendicular to the plane and inside as k cap so we can write this electric field intensity as a vector due to this ABC plate in between these two plates as 3Q2 epsilon naught A k cap. This is in the vector form. The electric field intensity in between the plates will be uniform. Why? Because we are taking the electric field intensity in the proximity of that plate. Why this proximity? Because it has been given in question. These two plates are very close to each other, much, and the distance between the plates is much, smaller than the linear dimension of the triangle. So electric field intensity we got. So electrostatic force, you know that electrostatic force on the plate A prime, B prime, C prime will be the electric field intensity due to ABC plate into the total charge on plate A prime, B prime, C prime. So this you know, so you can write 3Q by 2 epsilon naught A into K cap, and this charge is minus 2Q.
Total charge on plate A prime, B prime, C prime. So this will be the electrostatic force of attraction between the plates. Why I am saying attraction? Because positive and negative is attracting. And to cancel, so you got electrostatic force as minus k cap. So our positive k cap is inside into this plane, into this plane. So minus k cap will be out of this plane and perpendicular to it. So what is this force? This force is saying that on plate A prime, B prime, C prime, the force of electrostatic force is pulling it towards this direction, which is correct because positive and negative attracts. In this diagram, we have shown at A prime corner as FA prime is the force. And why this cross? Cross is representing the vector inside, means the force direction is into it. So why it is so at A prime point it should be inward? Because the rod is under compression. So the plate is pushing it in. The plate is pushing it in. So the force will be this side. So as per Newton's third law, the rod will push the plate out. So this way. So means the rod is exerting a force at A prime which has the direction inward. Same way for B prime and for C prime. The forces for identification which has been given at A prime is Fa prime, B prime is Fb prime, and C prime is Fc prime. Now this electrostatic force, because you know that this force is the cumulative force on each and every part, cumulative or net force which is acting on the plate A prime, B prime, C prime at each and every point, and you are summing it. So this force will be acting through the centroid of the object. So what is your object here? Your object is your plate. So what is the centroid? So centroid is when you draw a line from A prime bisecting B prime, C prime, from C prime bisecting A prime, B prime, and so on. So you will get the point O. So this is your centroid. So total force Fe is acting on the A prime, B prime, C prime plate this way, which we have calculated here. Forces the rod is exerting at the corner A prime, B prime, C prime is inward, and A prime is Fa prime, Fb prime, and C prime is Fc prime. There is no movement of the plate. There is no acceleration of the plate as per question. So it is in a stationary condition. So we can say that the net force acting on the plate A prime, B prime, C prime will be 0.
as you have studied. Summation of f on plate A prime, B prime, C prime. You can write mass into acceleration, but acceleration is 0, so this will be 0. And what is your summation of F? Which all forces? Fa prime plus Fb prime plus Fc prime, which is acting inward, so all are with the positive sign. And since we are writing in the form of vectors, so we should write like this. This is electrostatic force. So this will be 0. Fa prime, the magnitude, if we define like this, so for in the vector form we will have to write like this. Fe is 3q square epsilon naught A minus k is equal to 0. So what did you get from here? Fa prime plus Fb prime plus Fc prime is equal to 3q square divided by epsilon naught A. You can give the name of the equation 1, 2, 3 as per your convenience. Since O is the centroid, the position vector of A prime, the position is R1, position vector of B prime we have shown as R2, position vector of C prime as R3. So we know that from the vector we know that R1 vector plus R2 vector sum will be 0. Since the position vector is being taken from the centroid of this triangle. So this is your equation number 2. Do you see any rotational motion in this plate? As per question, nothing has been given. So it is not rotating, so there is no torque. Net torque on it, on A prime, B prime, C prime is 0. So if we take the torque about O, so we can write R1 cross Fa prime, R2 cross Fb prime, R3 cross
Fc prime plus 0 into Fe as 0, because there is no angular acceleration involved here. Angular acceleration is 0. And this 0 is because we are taking the torque about the point O itself. So moment arm is 0. So there is no torque for Fe. So what we got is R1 cross Fa prime, R2 cross Fb prime, R3 cross Fc prime as 0. So if we replace R3 in the terms of R1 and R2 from equation 2, so what we will get? R3 will be minus R1 minus R2. We can write Fa prime vector as Fa prime to K So this equation will become this. So further if you simplify it, it will become R1 plus R2 cross Fa prime Fb prime minus 2 Fc now this R1 plus R2, R1 is in the plane of A prime, B prime, C prime. R2 also is in the plane of A prime, B prime, C prime. So resultant of R1 plus R2 will also be in this A prime, B prime, C prime plane. Whereas K is perpendicular to this plane. So in the form of vector, if we do the cross product, so angle between this vector and K cap vector is 90 degree. Means it will come in the form of magnitude of this plus magnitude of this, no, magnitude of this into magnitude of this sine 90 degree. So from vector product it is not going to get 0. The other point is R1 plus R2 will never be 0.
So to satisfy this equation, what should be 0 so that this equation is satisfied. So your this part should be equal to 0. So this part is 0 means you can write fa prime fb prime a prime is equal to 0. So you got fa prime plus fb prime as 2fc prime. So this equation what we got, this equation what we obtained is by putting R3 in the terms of R1 and R2. Similarly, if you change R1 and put this in the form of R2 and R3, and R2 means one by one, and the second time R2 as R1 and R3, so you will be getting FB prime plus FC prime as 2FA prime. This you will get second equation. You can do it by yourself, like you can put R2 here in terms of R1 and R3, you will be getting such kind of result. Then FC prime plus FA prime as 2FB prime. Here you have FA prime plus FB prime plus FC prime as this much. So if you want to solve the equation FA prime plus FB prime, so you can put FA prime plus FB prime in the terms of 3q square by epsilon naught minus FC prime. So from this equation, three q square by epsilon naught a minus fc prime is 2fc prime. Or fc prime will be q square by epsilon naught a. Similarly, from this you will be getting fa prime. There's a simple calculation that you can do by yourself. And this one, so these are the magnitude of the forces which is being asked to calculate in our question. Find compressive forces developed in the rods. One thing you should notice, here it is writing compressive forces. It is not writing that you should get only the magnitude. So direction also is important for it. So when you give the answer, your answer should be fc prime. When you write in the form of vector, it will be q square by epsilon naught a k. Because it is pointing inward. So
that is why in the vector form we can write this. Same way fa prime so your answer should be like this. You should give the direction as well. A k unit vector you have given the name. So better you should write that your fc prime will be q square by epsilon naught a acting inward, acting inward and perpendicular to the plane of a prime, b prime, c prime. Same way for fa prime and fb prime. So hopefully you understood the concept. देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगुलर प्लेट सामने वाला है जो जिसपे 3q चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके पीछे सेम मीन्स आइडेंटिकल प्लेट है, सेम एरिया का प्लेट है, लीनियर डायमेंशन भी सेम है, मैच करता हुआ है। उस पर -2q चार्ज उसके ऊपर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये दोनों जो प्लेट है वो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग होने का मतलब होता है कि चार्ज को जहाँ आपने फिक्स कर दिया तो चार्ज जो चार्ज जहाँ फिक्स है वो उसी जगह पे रहेगा। तो चार्ज डेंसिटी ओवरऑल प्लेट पे यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। और ये दोनों को बोल रहा है, दोनों प्लेट को पैरेलल रखा गया है, पैरेलल रखा गया, एक दूसरे से पैरेलल है। और इस पैरेलल रखने के लिए इसके तीनों कॉर्नर पे एक एक रॉड लगा दिया गया है, दैट आल्सो इज नॉन कंडक्टिंग। वो रॉड भी नॉन कंडक्टिंग है। ऐसा किस लिए बोला गया है नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग रॉड है? अगर वो कंडक्टिंग होता तो क्या होता, चार्ज का फ्लो हो जाता रॉड के थ्रू, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे इंसुलेटिंग रॉड्स, नॉन कंडक्टिंग ट्रायंगुलर प्लेट्स। फिर तीसरी चीज जो दी जा रही है कि प्लेट का जो डिस्टेंस है, जो गैप है इन दोनों के बीच में, वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम है का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी प्लेट को जब एकदम अपने आँख से सटा के देखेंगे तो आपका विजन पूरा ब्लाइंड हो जाता है, आप सिर्फ प्लेट को ही देख पाते हैं। मतलब प्लेट आपके लिए इनफाइनाइट हो जाता है। और इनफाइनाइट प्लेट के लिए आपको पता है कि उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ये क्रिएट करता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से फॉर्मूला से दिया जाता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। मच स्मॉलर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मच स्मॉलर देन देयर लीनियर डायमेंशंस। अब ये दोनों प्लेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा मीन्स इसको मूव करना चाहिए और एक दूसरे पे कोलैप्स हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो रॉड है इसको कोलैप्स होने नहीं देगा, तो रॉड कंप्रेशन में आएगा। तो रॉड जो कंप्रेशन में आएगा तो हर रॉड प्लेट को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स देगा, जो उसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये क्रॉस जो दिखाया जा रहा है, आपको पता है कि एरो का जो ट्रेल होता है, जो बैक साइड जो होता है, वो आपको क्रॉस एक तरह ही दिखता है, क्रॉस सेक्शन। और फ्रंट जो एरो का होता है वो पॉइंट नज़र आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉइंट से दिया गया है, मतलब वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन, प्लेन के बाहर ऐसे लग रहा है। बट ये जो फोर्स जो लग रही है, जो रॉड इसके कॉर्नर पे लगा रहा है, वो अंदर की ओर लगा है। अब
हमने क्या किया, किसी एक प्लेट की वजह से, किसी एक प्लेट, इधर आप इस प्लेट लेते हैं या इस प्लेट पे लेते हैं, लेकिन मैं ए बी सी प्लेट पे ले रहा हूँ कि ए बी सी जो प्लेट है उसकी वजह से जो ई फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके अंदर, उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा उसका टोटल एरिया ए बी सी का ए दिया हुआ है, तो टोटल चार्ज उस पर 3Q है, तो 3Q बाई एरिया से उससे आपका चार्ज डेंसिटी सिग्मा मिल गया। तो आपको ये वैल्यू आ गई 3Q/2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसको जब वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो हमने इनसाइड वाले, इनसाइड की तरफ जो वेक्टर है उसकी यूनिट वेक्टर है उसको के कैप से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा ई फील्ड का डायरेक्शन बिकॉज ऑफ ए बी सी इज इनवर्ड एंड मैग्नीट्यूड इज दिस मच। तो ये जो है इस प्लेट पे ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम प्लेट पे कौन सा फोर्स लगाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि जो भी जो ये जो प्लेट है, इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इसके बीच में यूनिफॉर्म होगा और वो यही होगा। उसका सिंपल रीजन वही है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मच मच स्मॉलर देन द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट्स। ठीक है, तो इस पे जो टोटल जो फोर्स लगेगा तो हमें ई फील्ड इसके अंदर मालूम है, और ई फील्ड इस जितनी फील्ड लाइंस है सब इस पे परपेंडिकुलर है। तो जो टोटल फोर्स जो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम पे जो लगेगा, जो ए बी सी ने ई फील्ड क्रिएट किया है उसके अंदर, और उस ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम पे टोटल चार्ज जितना ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। कि आपको पता है, आपने वैल्यू रख दी तो आपको ये आ गया, माइनस के आ गया यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन, विच इज राइट। पॉजिटिव एंड निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही आना चाहिए। फार्मूला से भी मुझे वही आ रहा है, मैथमेटिकली भी वही आ रहा है। अब इस प्लेट असेंबली का कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए प्राइम बी प्राइम सी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं हम सबको वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर सम क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ, हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो है, कोई मोशन नहीं है, तो इट मीन्स कि समेशन ऑफ एफ जो ऑल जो फोर्सेस जो लग रहे हैं ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम पे, उसका सम जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल गई, नंबर 1 मिल गया। अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, जो नेट फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब कोई ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होता है उस पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होता है, जो टोटल जब आप करते हैं वेक्टर से, तो दैट इज assumed to be acting through the center of mass of that object। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसका सेंट्रॉयड होगा। तो हमारा जो एफ ई जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके सेंट्रॉयड पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सेंट्रॉयड को ओ से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब सेंट्रॉयड से मैं पोजीशन वेक्टर बना लेता हूँ ए प्राइम का, बी प्राइम का, सी प्राइम का, उसका नाम दे देते हैं R1 R2 एंड R3। तो बाई वेक्टर knowledge we know that R1 plus R2 plus R3 will be, vector sum of these three vectors will be 0। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है
जिसको आप अगर नहीं समझ पाए हैं, अगर आप डाउट में लिखते हैं तो देन आई कैन टेल यू हाउ इट हैज कम। अगर मैं अभी बताऊंगा तो ये क्वेश्चंस काफ़ी लंबा हो, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रॉइड से जो पोजीशन वेक्टर तीनों कॉर्नर का होता है उसका वेक्टर सम 0 होता है। अब हमने क्या बोला कि चलो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, साथ में कोई मोशन ही नहीं है, देयर इज नो रोटेशन ऑल्सो। रोटेशन नहीं है इसका मतलब उस पर जो टोटल टॉर्क लग रहा है वो भी 0 है। टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट हम कन्वीनियंटली ले सकते हैं, हमारे लिए सबसे अच्छा पॉइंट है ओ के अबाउट ले लेते हैं, ठीक है। ओ के अबाउट जब टॉर्क ले रहे हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस एफ ए प्राइम, R2 क्रॉस एफ बी प्राइम, R3 क्रॉस एफ सी प्राइम प्लस 0 इंटू एफ ई। 0 क्यों, क्योंकि मोमेंट आर्म 0 है, इसी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, उसी ओ पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, एफ ई ओ पॉइंट के थ्रू काम कर रहा है। अब इसमें मैंने R3 को रिप्लेस कर दिया, माइनस R3 को ऐसे रखा और R1 R2 को इधर ले गया तो माइनस R1 माइनस R2 हो गया, रख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गया, R1 प्लस R2 इंटू दिस। अब इस इक्वेशन को देख करके आप सोच सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन 0 कब कब हो सकता है, तो हमारा आइदर ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर 0 हो जाए। तो इन तीनों में मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा सही होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि R1 एंड R2 का तो वेक्टर सम कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वेक्टर अगर ये R1 है ये R2 है तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्टेंट जब आप पैरेललोग्राम से बनाएंगे तो ये होगा, तो ये कभी 0 होगा नहीं, आपका R1 प्लस R2 ये होगी, तो ये वाला आपको 0 होगा नहीं, तो ये 0 नहीं होगा। अब वेक्टर के टर्म में देखिए R1 प्लस R2 का रिजल्टेंट किस प्लेन में होगा, R1 भी A प्राइम B प्राइम C प्राइम प्लेन में है, R2 भी A प्राइम B प्राइम C प्राइम प्लेन में है, तो इनका रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में होगा। वेरएज के वेक्टर क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें मालूम है जब अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखते हैं। तो यहाँ पे इस वेक्टर और के वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से भी आपका ये 0 होने वाला नहीं, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बच गया, नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या है कि हमारा यही 0 होगा, सो दिस विल बी द राइट वन। ये हम कंक्लूड किए कि ये होगा। तो इससे मुझे जो रिजल्ट मिल गया कि ये 0 है, तो मुझे ये रिजल्ट मिल गया एफ ए प्राइम प्लस एफ बी प्राइम टू एफ सी प्राइम मिल गया। सेम वे जैसे मैंने R3 को R-R1 माइनस R2 से रिप्लेस किया, अगर आप R1 को माइनस R2 माइनस R3 से रिप्लेस करेंगे तो आपको पीछे ये मिल जाएगा। फिर उसी ढंग से तीसरे R2 को अगर माइनस R1 R3 के टर्म में डालेंगे तो ये मिल जाएगा। ये आप खुद के आपके कैलकुलेशन के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो हमें ये तीन इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये एफ ए प्राइम एफ बी प्राइम एफ सी प्राइम का वैल्यू मिला हुआ है, तो मैं एफ ए प्राइम और एफ बी प्राइम को अगर एफ सी प्राइम के टर्म में रिप्लेस कर दूँ 3q² बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस एफ सी प्राइम, मतलब इसको इधर ले जाए और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे रख दूँ, एफ ए प्राइम प्लस एफ बी प्राइम इज दिस मच इज इक्वल टू एफ सी प्राइम, तो आपको एफ सी प्राइम मिल गया q² बाई एप्सिलॉन नॉट ए।
सिमिलरली आपको एफ ए प्राइम मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए, एफ बी प्राइम आपको क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में सिर्फ फोर्सेस के बारे में दिया हुआ है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो आपको फोर्स जहाँ दिया जा रहा है आपको मालूम है फोर्स इज ए वेक्टर, तो आपको डायरेक्शन का भी जानकारी देना पड़ेगा आंसर। तो डायरेक्शन के जानकारी के लिए ऑलरेडी आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है, आपने देख चुके हैं, आप ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं कि एफ ए प्राइम अंदर की ओर लग रहा है, एफ बी प्राइम अंदर की ओर लग रहा है, एफ सी प्राइम अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर आपका यूनिट वेक्टर के आपने माना हुआ है। तो आपको फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा आंसर के लिए, एफ सी प्राइम एफ ए प्राइम दिस मच एफ बी प्राइम, बट के आपने माना है, आपका एग्जामिनर नहीं उसको पता है। तो आपको के को मोर स्पेसिफिक होने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि एफ सी प्राइम जो लग रहा है सी कॉर्नर पे जो फोर्स लगा रहा है रॉड प्लेट पे, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड तो ये है, और उसका जो डायरेक्शन है वो प्लेट को इनसाइड लग रहा है, प्लेट का जो प्लेन है उसके इनसाइड लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन। उसी वे में आपको एफ ए प्राइम को भी बोलना पड़ेगा, एफ बी प्राइम को भी बोलना पड़ेगा। सो होपफुली आंसर क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट है, डू नॉट हेजिटेट टू राइट। The more you interact, the more you will understand. Even the slightest doubt, you can come back with your question in the comment box, and I will definitely reply to that to best of my capacity. Thank you.